Welcome everyone. In today's video, you're going to see real hair transplant transformation journeys, real patients, real results, and real experiences. So without wasting any time, let's get started. Are you also searching for the right hands to trust for your hair transplant? Choosing a safe and experienced team is one of the most important decisions you will ever make on your hair restoration journey. Today, we bring you the story of a patient who has struggled with the same challenges while researching the right clinic. When he came to us, he had a baldness of Norwood grade 6 stage, a stage where the hairline had completely disappeared, leaving no traces on the frontal region, mid-scalp or crown. His scalp appeared entirely bald, which made him look much older than his actual age and affected his confidence deeply. But here is where his transformation began. Despite his advanced baldness, his donor area was highly favorable, filled with healthy and strong hair follicles. With the right planning and precision, our experts extracted a total of 5,530 follicles from the safe donor zone. Each follicle was carefully implanted to rebuild his hairline, restore density across the frontal zone, mid-scalp, and crown, and ultimately bring back his youthful appearance. So, let's hear from our patient about his experience, and we hope you'll find the safe hands by the end of this video. Hello everyone, my name is Vishwanath Pujar. My age is 28 and today I have come for my transplant surgery. I have come to Haridwar QHT Clinic and I was facing my hair loss since 6 years and it took me around 2 years to convince myself and my family to go for a hair transplant surgery. And until now everything was very nice. The QHT team, back-end sales team, everyone hosted me very well. It was a very pleasant meeting QHT team. Now I have finally reached QHT Haridwar after a long survey. I started noticing my hair loss when I was in college, and I used to get a lot of hairs while I used to comb, and when I used to get up from my bed I used to see hairs falling on my pillow, and when I used to go to bath I used to see a lot of hairs in the drain. So I used to feel very scared and very inconfident, and what made me feel very demotivated and bad is people used to notice and they used to give me a lot of uneven suggestions which used to make me feel very uncomfortable at that moment. And even I used to avoid attending social gatherings, photo sessions. I literally stopped myself taking pictures. So this was my conditions after I started losing my hairs, and I realized I have to settle with a bald head because I was unaware of I was even scared of hair transplantation things. I used to see videos and all. I used to read a lot of things about hair restoration and all. I have tried almost everything a normal average guy could try to restore his hairs. I have tried a number of shampoos, a number of clinics, and also Ayurvedic, allopathic, everything, literally everything. People used to suggest me I used to go for everything which people used to remind me of. Whenever they used to see my bald head, I used to feel so inconfident to show my bald head to people. I used to always be on the cap. I used to be uncomfortable in the social gathering. So I finally found a video of QHT on a social media platform. I started following their channels and I realized a lot of common people. I personally don't want to go for celebrity or influencers things. I noticed a lot of common people used to get a very good and very dense result. They used to get a very nice hairline. So before contacting QHT, I have gone through n number of clinics. I don't want to take names actually, but I have consulted a lot of clinic. I had done around 2 years of surveys. In clinic, camera person also asked me that why you took 2 years to take a decisions, because I wanted to choose best for myself. I wanted to give best to myself. So I was looking for something which can give me a best result in a economical or a budget friendly price, you can say. And I was looking for something which is same for even celebrity and even same for a common person. I have seen a lot of people having a very good result from QHT. So that made me go for a QHT, and I got confidence on QHT. That's why I chose QHT.
So when I think of reasons for my hair loss, I get a number of things. Namely, I feel it is because of my oily skin, maybe because of my genetics, and also maybe because I tried lot of medications, a number of medications, and I had dandruff issue as well. So there are a lot of factors which actually contribute towards average person's hair loss. In my case, I guess it was a genetic hair loss, and also there was a maybe because of a change of water, weather, or maybe like nowadays we are facing lot of water impurification. So that might be reason in my case, but I feel I started my hair loss at a very young age, so I strongly feel it was strongly affected by my genetics and also by water impurification. And there are a lot of things which add-ons to the hair loss, which in fact increases the hair loss along with the genetical issues. It took me around 2 years to choose a clinic, and everyone was shocked to know that in the clinic as well. So I just want to answer them that see, it takes some time to choose a wise clinic and also to take a good decision for to go for a hair transplant. And when you come from an Indian family, we have to convince our parents. We can convince ourselves very easily, but we can't convince our parents because they'll be having some different sort of mindsets and all. So it took me around 1 year to convince my mother alone, because when I asked her that I'll be going for hair transplantation, she started yelling at me because she started reading some things and looking some things on social media, which caused her to say no for my hair transplant. But later on, when I convinced her and asked her to follow QHT channel, and she also did her research, asking her friends and family circle. So one by one, she started knowing about hair transplantation things. And there are a lot of people nowadays they're doing hair transplant, and they're going back for their work on the next or within 2-3 days of their surgery. So she started noticing good changes in the people. She even saw results of the people who were who had a good hair transplant surgery. And she also started looking after this QHT YouTube channel. She used to search a lot of things when after she said no for hair transplantation, and then she finally agreed. She said, okay, you can go for hair transplantation, but choose a wise clinic where you can get a nice hair transplant and there will be no complications with your health or no complications with your surgery. So she is my mother anyways. She would love me with or without hair, but she just wanted me to have a good health, and she didn't wanted me to face any complications over hair transplantation surgery. That made me again go for a good clinic, make a good survey to choose a wise clinic. So this was my journey for choosing clinic. Initially, when I contacted clinic, the team helped me with a warm welcome, and then they asked my pictures, scalp pictures, and donor area pictures, along with the beard pictures as well. They took some time and they get back to me. They said the required grafts for my scalp, and then I had some queries, I had some requirements. So I said that I'll be in need of a dense hairline, a proper cut hairline, density in the frontal zone. I had some n number of requirements. So they also made me consult with the doctor, and doctor helped me with practical things which I even didn't knew until I spoken with the doctor. So he told me that surgery will be performed on what parameters. So I got an idea that these doctors are qualified, and they don't just promise. They'll be doing their surgery according to the medical procedure, but not according to the there'll be no false promises, or there'll be no mumbo jumbo answers and all. So I finally realized that these doctors are qualified, and they can finally give a good touch to your hairline and hair graft implantation or hair
graft extraction and all. They had very dense knowledge and they explained me very nicely, so I could understand it, even being a common man. So I could understand what they actually wanted to tell. So this made me go for a QHT clinic again. And the backend team, the marketing team, and their sales team, they are very excellent at their job. They used to follow up every day. They used to ask me for the pictures. They used to make me consult with the doctors. They used to tell about my grafts. I was told around 5,000 grafts initially, but later on when I asked, I want a very good density, and I want even my this beard grafts can be extracted. So I was told around 5,500 grafts later on. So I was happy with that. So then I got to know about my hair transplantation budget and all. So I was convinced with the budget. So then I decided to go for a QST. Basically, I convinced myself for a hair transplantation at QST clinic only when I realized that I am in a safe hands, and only when I realized that my health, my scalp, my donor, and my medical conditions will be in a safer hands, and they'll be performing my surgery with utmost care. I had a lot of queries. I think no one will be having those much of queries. I used to ask question n number of time until I used to get a satisfied answer. So not in the sense they don't used to satisfy me with my desired answer, but they used to give me medically proven answers, which I used to feel, yeah, they are actually at a right path, and I used to get convinced with their answers. So it was like a good journey, you can say. I had lot of questions, and I used to ask them repeatedly, and they used to guide me. They used to tell me every answer and everything in detail. So I was explained with everything before I even come to QST clinic. Then only I agreed for a transplantation. So I had a lot of queries like how the surgery will be performed, what will be the medical procedure, and the best part of the surgeries, they asked me for a lot of blood tests also, so which I done at my place, and then I sent report. And there was a basic complication, and they even asked me for a repeat test. That was also best part. Actually, when it comes to repeat test, some people may feel that it's why simply they are doing tests again and again, but to get to know your blood reports, or to examine your body things, they must know how your body interacts, how your body blood flow is. So I was okay with that. Initially I was given blood test, and I was given for a repeat test as well. So I was convinced with that, thinking this clinic is doing something good. They don't want to take a chance with the patient's health or patient's life. I basically had queries regarding my hairline issues, and how they will be designing my hairline, how they will be implanting my hairs, and how many days this surgery will be going on, and how will I be taking care of my surgery after the transplantation, what all I have to eat, what diet I have to follow, and how long the medication will last. There will be a lot of n number of queries. If I start counting, it will take a lot of time. But basic thing is, they all helped me with my queries. They see, if we are going for a hair transplantation surgery, it's a surgery. We have to take, and we have to be ready for some sort of medication, some sort of blood test, and some sort of diet as well. The result will enhance when we take care of these things. So I was convinced with this. I was mentally and physically prepared for the things which I have to follow after my surgery. So this made me go for a easy decision. In a present scenario, everybody has a social life. Everyone wants to post their pictures. Everyone wants to be socialized. So a part of which is lost from my life since I started facing hair loss. So I have a request, and I have an expectation from QST that they'll be giving me a good hairline, a good density, and a natural confidence which I can which leads me to get socialized, post some pictures, at least be myself. I used to hide myself and my scalp from
some social life, social crowd. I used to stop attending and avoid attending social gatherings like marriages, birthdays, friends, everything. I have lost, because of hair loss, lost my social life, friend circle, and also some sort of confidence which I used to which I may gain through my hairs, which with my looks. My look will be, I am damn sure my look will be enhanced after my hair transplantation results. I'm just having a expectation that QST will perform a good hairline and good surgery. They'll not be harming my donor area. I just have some minimal medical expectations, and I'm damn sure if I'm following a good diet, if I'm following a good care of medication, then I'll definitely be getting a good result. Now I'll be going for my surgery. I'm really excited, and I am also a little bit nervous how my surgery will be performed. Whether I have already spoken with the doctor, they have agreed to whatever requirements I had regarding my hairlines, hair density, and the hair extraction and implantations. I have spoken with them. Just thing is a little bit nervousness. Who will be going to perform my surgery? What will be the procedure? How it will go on? And how long will I have to stay here? There will be some sort of nervousness. But I'm, to be frank, I'm very much excited for my surgery, which I was awaiting since 2 years. So let's see how it goes. I'll be informing you everything after my surgery. Follow my journey. Thank you, QST. हेलो गाइस, मेरा नाम विश्वनाथ है। मेरी अभी जस्ट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। विद एक्सपेक्टेशंस कि मुझे अच्छी वाली हेयर लाइन, अच्छी वाली डेंसिटी और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ की सेफ्टी भी ज़रूरत होती है, एक हेल्दी लाइफ लीड भी करना होता है। हेयर्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो हेयर्स के साथ साथ मेरा लाइफ और मेरी बॉडी है एक सेफर हैंड में हो, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। इसको QHT क्लिनिक ने बहुत अच्छी तरह से फुलफिल किया है। इनिशियली मैं बहुत डरा हुआ था, बट ट्रस्ट मी, चूजिंग अ QHT क्लिनिक वाज बेस्ट एवर डिसीजन ऑफ माय लाइफ। रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा इफ आई एम टेकिंग केयर एंड टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशंस। बट द थिंग इज द वे दे आर परफॉर्मिंग सर्जरी। जब मैंने जो मैंने पहले आपसे बात करके जब सर्जरी के लिए अंदर गया OT में, हर एक चीज़, हर एक मेडिसिन जब मुझे दी जाती थी, हर एक चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया जाता था। यहाँ तक कि टिटानस के बारे में, या मैंने पहले कभी लिया है या नहीं लिया है, 6 महीने में कभी लिया होता तो अगर मैं दोबारा ले जाऊँ तो मुझे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते थे। तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड दे विल एक्सप्लेन अबाउट एवरी मेडिकेशन। एंड वेल परफॉर्मिंग सर्जरी, दर्द हाँ थोड़ा बहुत होता है। जब इंजेक्शंस वगैरह आपके सिर के ऊपर लगती है, यू डोंट हैव एन आइडिया। आपके बॉडी पे हर जगह पे इंजेक्शन लगी होती है। व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन, बट वो इतना लास्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इंजेक्शन दिया ही जाता है आपके पेन को कम करने के लिए। एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया जाता है। जो भी एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने से पहले आपके बॉडी के ऊपर, आप मेरे हाथों पे देख सकते हो, ऐसे वाले चेकिंग करके आपके बॉडी को जो सूट होता है, सेट होता है, सब कुछ चेक करके आपको दिया जाता है। तो इट विल बी हैविंग नो साइड इफेक्ट्स। एंड जब आपका एनेस्थेटिक इफेक्ट खत्म होने वाला होता है, उससे पहले आपको फिर से एनेस्थेटिक इफेक्ट देके फिर से सर्जरी कंटिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं कि एनेस्थेटिक इफेक्ट खत्म होती है आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। और सर्जरी के बाद तो पेन होता है, बट ऐसा नहीं कि अगर आपको कहीं हल्का सा मार लगा हो तो वो थोड़ा बहुत दुखता रहता है ना, ऐसा पेन होता है। इतना भी हेवी पेन नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ। पेन तो मेरे हिसाब से आई वुड से देयर इज नो पेन आफ्टर सर्जरी। एंड वेल परफॉर्मिंग सर्जरी देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पेन, आई डोंट वांट टू लाई, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पेन व्हिच इज कंट्रोल्ड थ्रू दिस एनेस्थेटिक इफेक्ट। एंड मोरोवर मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे
होंगे, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो चुके होंगे, जैसे मैंने भी ऑलरेडी हुआ था कि इट टुक मी अराउंड 3 years एज यू नो टू चूज अ वाइस क्लिनिक। जब मैं QHT आया, सिंस मैं जब तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बुकिंग हो गया था, बुकिंग अमाउंट मैंने किया था, बुकिंग अमाउंट करने के बाद भी फॉलोअप तो बहुत अच्छे से कर ले रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लोग डेली कॉल करेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगा, जब मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी जरूरत पड़ेंगी, या फिर जब आपका डेट कंफर्म करना हो, या फिर आपके बुकिंग के बाद आपके ट्रैवलिंग का कंफर्म करना हो, इस रिलेटेड वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बुक किया है तो आपको कंटिन्यू कॉल करते रहेंगे। हाँ, बुक करने से पहले मार्केटिंग टीम वाले, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्लॉट्स वगैरह बुक करने के लिए आपको कंटिन्यू कॉल करते रहेंगे। बट when it comes to your surgery, when you reach QHT clinic, you will realize that आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक सा प्रोसीजर होता है, बहुत क्लीन एंड हाइजीन। और इनका एक QHT एक सिर्फ नाम नहीं है मेरे लिए, एक टीम वर्क है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है कि कैमरामैन से लेकर, नर्सेस से लेकर, और जो रिसेप्शनिस्ट से लेकर, क्लीनर से लेकर, हर एक चीज़ मतलब टाइम टू टाइम अपने आप होती रहती है। एक सर्कल में एक क्लॉक जैसे घूमते रहता है, वैसे इट कंटिन्यूज टू वर्क ऑन इट्स ओन। आपको मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आप अगर जब आओगे तो आपको एक नर्स अलॉट किए जाएंगे, आप उनके साथ सर्जरी को जाओगे। अब दूसरा दिन आपका सर्जरी है तो आप दूसरे दिन भी एक नर्स अलॉट होंगी, वो आपको लेके जाएंगी। यहाँ तक कि आपके स्लीपर निकालने से लेके आपके जो OT में जो स्लीपर पहनोगे वहाँ तक भी आपका केयर लिया जाता है। और जब आप अपने जो OT के यूनिफॉर्म होते हैं वो पहनने के लिए भी आपको मतलब स्टेरिलाइज्ड यूनिफॉर्म दिया जाता है। बहुत हाइजीन है कंपैरेटिवली, बहुत सारे क्लिनिक को कंपेयर किया तो बहुत हाइजीन है। लाइक चूजिंग अ QHT क्लिनिक वाज I somewhere feel it was best decision of my life। आप देख सकते हो मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 3 दिन लग चुके हैं। पहले और सेकेंड डे अराउंड इट टुक अराउंड 7 to 11 hours टू मार्किंग से लेकर, हेड वॉश से लेकर, हेड शेविंग से लेकर, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होती है जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बट टाइम जाता है इसलिए क्योंकि दे वांट इट टू बी परफेक्ट एंड दे वांट इट टू बी इन अ गुड मैनर। सो हायरार्की होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसको वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं। दे वोंट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू हाइजीन और व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ अ पेशेंट। वो बहुत ज़्यादा केयर लेते हैं, बार बार पूछते हैं अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, पानी चाहिए, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं। इवन इफ यू आर गोइंग टू वॉशरूम, वो आपको वॉशरूम तक छोड़ते हैं, फिर वेट करते हैं। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप ज़्यादा देर वॉशरूम में रुक भी रहे हो तो नॉक करके पूछते हैं। यही सेफ्टी बहुत मैटर करती है उनके लिए। और व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर्स, दे आर वेरी, एवरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बिजी होते हैं। डॉक्टर्स तो हर सब चीज़ डॉक्टर नहीं कर सकते। सो हियर इज अ टीम। QHT itself says it's a team। सो डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होती है, नर्स होती है, उनका काम वो लोग करते हैं। मतलब इससे क्या हमें, मतलब मुझे क्या अच्छा लगा, मतलब जो इंसान जिस चीज़ के लिए परफेक्ट है और जिस चीज़ में वो एक्सपीरियंस्ड है, उस चीज़ को QHT टीम उनसे करवाती है। हमारे जो ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है थोड़ा परफेक्शन निकल के आती है और थोड़ा फिनिशिंग में दिखती है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सुबह से अगर रात तक एक सर्जरी परफॉर्म करता रहे, आई डोंट थिंक वो वाला रिजल्ट हमें मिलेगा, वो वाला परफेक्शन हमें मिलेगा। देयर इज अ टीम वर्क एंड देयर इज अ परफेक्शन। आई जस्ट वांट टू टेल दीज ऑल थिंग्स। इनिशियली सर्जरी से पहले जब अभी मेरा हेड वॉश नहीं हुआ था तो मेरा हेयरलाइन बनाया गया था। समवेयर आई वाज फीलिंग लाइक ये मुझे फेस पे सेट नहीं हो रहा है, बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो गया, ऐसे मुझे फील हो रहा था स्टार्टिंग में। बट आफ्टर सर्जरी, जैसे कि डॉक्टर मैम ने, जिन्होंने मेरा हेयरलाइन बनाया था, उन्होंने कहा था कि मेरा हेयरलाइन जो है मेरे फेस के हिसाब से बनाया गया है और वो जब ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा और नीचे भी आता है और वो नेचुरली दिखना चाहिए हेयरलाइन। सो आई वाज लिटिल डिससेटिस्फाइड व्हेन माय हेयरलाइन वाज ड्रॉन, बट नाउ आई फील उनका मतलब तजुर्बा और उनका एक्सपीरियंस बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा है। सो जैसे कि आप भी देख सकते हो, फील कर सकते हो, मेरा हेयरलाइन बहुत नेचुरली निखर के आया है। मैंने भी मिरर में देखा है, अभी आपसे इंटरव्यू देने से पहले मैंने कम से कम 2-3 बार मिरर में देख के मेरे हेयरलाइन को, मतलब मैं अंदर से खुश हूँ तभी ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ आपको। सो हेयरलाइन हो और जो डेंसिटी मैंने मांगी थी वो डेंसिटी मुझे मिली है। हाँ, समवेयर मुझे लग रहा था कि मेरे हेयरलाइन में डेंसिटी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने मेरा डिससेटिस्फेक्शन जो है मैंने डायरेक्टली जाहिर किया। ये भी देखा जाता है कि आपके डोनर एरिया में कितने हेयर्स
हेयर ग्राफ्ट्स मिल सकते हैं। मेरे बैक डोनर से मुझे नहीं चाहिए था कि बहुत सारे हेयर ग्राफ्ट्स निकाले जाए, सो उन्होंने एक मॉडरेट डेंसिटी देने की कोशिश की है और यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन मतलब ये होता है कि आपके जो अवेलेबल हेयर्स है, जो बियर्ड हो या फिर बैक ऑफ द हेड हो, डोनर एरिया हो, उससे ना जितना हम निकाल सके उतना ही निकाला जाए। तो उतने हेयर्स में मुझे जितना डेंसिटी वो दे सकते थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने ट्राई करके मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन, यूनिफॉर्म इम्प्लांटेशन करके एक मॉडरेट डेंसिटी और एक अच्छी हेयरलाइन दी है। और हेयरलाइन में जो डेंसिटी चाहिए होती है, जो अग्रेसिव डेंसिटी चाहिए होती है, जो आजकल बीइंग अ 28 ईयर ओल्ड, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स अगर मेरे होते तो जो डेंसिटी मैं एक्सपेक्ट कर पाता, वो डेंसिटी उन्होंने देने की बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ तक कि मेरा ना एक्चुअली इनिशियली इट वाज टोल्ड 2 days प्रोसीजर, बट इट टुक अराउंड 3 years। मैं फर्स्ट डे अराउंड 9 o'clock यहाँ पे आया था। फर्स्ट डे मेरा पूरा क्लिनिक पे ही चला गया अराउंड 8 to 9 o'clock तक। सेकेंड डे 7 to अराउंड 8 o'clock तक मेरा क्लिनिक पे चला गया। एंड टुडे वाज माय थर्ड डे एंड आई एम गेटिंग डिस्चार्ज टुडे। एंड मेरे अपने एंड से वो जो कुछ भी मतलब फिनिशिंग कर सकते थे सब कुछ करके मुझे डिस्चार्जिंग के लिए उन्होंने अलाउ किया है। और डिस्चार्जिंग के साथ साथ मुझे पहले कैबिन में बुलाकर, अभी मैं डिस्चार्ज के तुरंत बाद कल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो आई कांट डू माई हेड वॉश इन द क्लिनिक। सो उन्होंने इस चीज़ का भी गाइड किया कि मैं हेड वॉश कैसे कर पाऊंगा और मेरे खुद से हेड वॉश कैसे करने हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे मेडिकेशंस यूज़ करने हैं, कब कब क्या क्या मेडिसिन लेना है। उन्होंने सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में दिया गया है। नॉर्मल एवरेज ह्यूमन, मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल एवरेज ह्यूमन भी वो समझ सकता है। हाँ, ये बिफोर फूड 2 बार लेना है, बिफोर फूड 3 बार लेना है, या दिन में 3 बार लेना है, दिन में 4 बार लगाना है ऑइंटमेंट। ये इवन एक लाइक नॉर्मली जो एवरेज इंसान होता है, जो नॉर्मली कुछ भी पढ़ पाता है, तो वो समझ जाता है। तो इतना अच्छा इनका सिस्टम है कि इनके क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे और ये जाने के बाद भी ज़्यादा मतलब मेडिसिन के रिलेटेड हो या फिर हेड वॉश के रिलेटेड हो या फिर इनके ड्रेसिंग के रिलेटेड हो, ज़्यादा टेंस ना हो पाए। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस उनसे पूछे क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। बिकॉज आई समवेयर मेरा ये कंसर्न रहता है कि मैं सही ना करूँ तो ना करूँ, बट गलत मेरे साथ मैं खुद नहीं करके लेना चाहता। गलत कुछ मतलब गलत खाना पीना हो या फिर गलत हैंड वॉश यूज़ करना हो या गलत तरीके से नहाना हो, हेड वॉश हो, गलत तरीके से करने से रिजल्ट पे इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को तक उन्होंने कामली मेरे सभी क्वेश्चंस को आंसर किया है। ये मुझे बहुत खुशी देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आज सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और इतने एरिया में मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। जो मेरा क्राउन एरिया से लेके जो हेयरलाइन का एरिया होता है वहाँ तक ट्रांसप्लांट हो गया है। हेयरलाइन यहाँ पे क्लिनिक पे बहुत अच्छी तरह से किया गया है और जो क्राउन एरिया होता है, जैसे कि ग्राफ्स क्राउन एरिया में टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक सर्कुलर एंगुलर में होते हैं, उनको अच्छे से प्लांट किया गया है। और मेरी सर्जरी में अराउंड 5500 प्लस ग्राफ्स लगी है और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड हूँ मेरे हेयरलाइन को और मेरे डेंसिटी के साथ, क्योंकि मेरा डोनर जितना दे सकता था, डोनर जो बियर्ड हो या बैक ऑफ मेरे हेड हो, जितना दे पाता था उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। और मैं मेरे रिजल्ट को मतलब बहुत एक्साइटिंगली वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा रिजल्ट आए और मैं कब आपको और एक मेरा इंटरव्यू दूँ और आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ। डॉक्टर से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि मेरी पीआरपी सेशंस होंगी, कितने पीआरपीज अटेंड करनी है, कितने दिनों तक मेडिकेशंस लेनी है, कब से मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 10 दिन के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती है, बहुत सारे इन द सेंस कुछ मल्टीपल, सभी हमारे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए जो भी एंटीबायोटिक्स होती है या जो एंटीबायोटिक्स लेने से जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ मेडिकेशन है। मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं कैमरा के सामने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ एज अ कॉमन मैन। तो इतने अच्छे से डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया है और उन्होंने ये भी बताया इवन आफ्टर जो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है, अगर मैं भूल जाऊँ या मुझे समझ में नहीं है, कंफ्यूजन है, तो मैं इनके हेल्पलाइन पे या फिर रिसेप्शन पे कभी भी कॉल कर सकता हूँ। और कल से ना मुझे फॉलोअप के लिए कॉल्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और जब भी मैं पीआरपी लेना होगा वो सब मुझे मेरा टाइमिंग वगैरह बता दिया जाएगा। उस टाइम पे मैं जब पीआरपी के लिए आऊँगा मैं अपना फीडबैक और मेरा जो हेयर ग्रोथ है या फिर मेरा शेडिंग फेस है वो उसके बारे में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तब तक के साथ आप इस वीडियो के साथ और मेरी जर्नी के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू QHT टीम।